Hello everyone, how are you? I think that I'm audible to you. If I'm audible to you, please let me know in the chat box. And if the screen is visible to you, then also click the yes. The screen is visible. Okay, Bhagat. अच्छा स्क्रीन आपको ज्यादा बड़ी तो नहीं आ रही है ना? इज इट फाइन ना? Okay. Make sure the screen size is also good. Got it. Everything is perfect. ठीक है. Okay, so hello everyone. How are you all? I welcome you all in this session of wave optics. And probably this would be the last session of this wave optics. So in today's class, we are going to learn about diffraction. Now in the previous session, what we have learned about the interference, है ना? And I hope that you gone through it and you have revised this chapter like what we have did in the interference. ठीक है? And what kind of interference pattern do we have, and what is the relation between intensity and what is width, angular width of the fringes. So everything I think you have gone through it. Now today we are going to learn about diffraction. It is similar to interference, but there are some changes here. So we have to focus on that changes. Diffraction we are going to learn, then diffraction pattern. Then we will see probably what is the exact difference between diffraction and interference, and then polarization. Okay. So let's just quickly start the class. First of all, introduction to diffraction. Now, what is diffraction? Suppose there is a source S here, which is emitting light. If we place an obstacle in between them, and this is the screen. So what you will find on the screen that on this, if this is the obstacle, so probably this should be the reason where light should not be coming. Got it? But what we are seeing that it is increased angularly. It has been increased. Why this increment is coming out? This increment is coming out because of the bending of light at the corner or the sharp corner of this particular obstacle. So when light bends from the sharp obstacle, when light bends from the sharp edges of an obstacle or a screen or a slit, then that particular thing, that particular phenomena or bending of light is termed as diffraction. देखो, so here the why is the reason of diffraction. Now, bending of light around the corners and the encroachment of light within the geometrical shadow, okay, of the opaque object is called diffraction. What do you mean by encroachment? Encroachment means, देखो, whatever the area of shadow, this is the, let's say, shadow. This is the area of shadow. Okay. So if light is disturbing this area and increasing this area like this, so exactly what you are having here, you will not having light and dark. You will having light and then suddenly light start dimming, and then you will finally achieve the shadow portion or the dark portion. So this encroachment of light into the region of geometrical shadows is also termed as diffraction pattern. ठीक है. अब देखो हमें इसकी शार्प शेडो मिलनी चाहिए थी, लेकिन शार्प शेडो मिलने के बावजूद भी वी आर हैविंग सम लाइट अराउंड द कॉर्नर्स. यहाँ से आपको लाइट बढ़ती हुई दिखेगी, बट एकदम से डार्क और एकदम से ब्राइट नहीं दिखेगी. सो ये जो एकदम से डार्क और एकदम से ब्राइट नहीं हो रहा है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द डिफ्रेक्शन. इट मीन्स दैट लाइट इज बेंडिंग from the corners or the sharp edges of a
obstacle. And this phenomena is termed as the bending of light, which is nothing but diffraction. So how this bending occurs? Let's say this is the slit we have taken. We're increasing the size so that you will understand that how this is happening. Although this slit distance is that this width is very less, and it is as less that you cannot see it through like the eyes. You have to use the lenses here to see that this width. Okay. Now suppose this is a plane wavefront is coming of light. When it start colliding with this obstacle, only this part of the light it will allow. Got it? And this part will also behave as a source. So each point on this line, on this wavefront, will behave as a source. We know from the Huygens principle that each wavefront is compiled of number of sources, and each source will behave as a point source. And point source से कैसा wave pattern निकलता है? Circular. And forward वाला we have to take. ठीक है? So that is why we have drawn this. Now, if you focus here, each and every particle will behave as a source, and each and every particle will produce a wavefront. Now, due to this, if you combine these points where these points are meeting, let's say this, this, you will again have a wavefront here. Okay. Now, this wavefront will travel further. So, having another wavefront. So, if you will see the distance or the size of this outgoing wavefront is increasing. Got it? And it is because of the bending of light, because light has a tendency to bend around the corner. तो यहाँ से कॉर्नर से टकरा करके ये बैंड हो रही है लाइट कॉर्नर की तरफ. ठीक है. इसी फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोलते हैं. फॉर एग्जांपल लाइक दिस इज अ वेरी नैरो स्लिट. So in this video you will see we have a very narrow slit and a screen. Now these are the plane wavefront coming to the screen. Although this slit is having very small size. So इसका साइज स्मॉल होने की वजह से इट विल बिहेव एज अ पॉइंट सोर्स. और पॉइंट सोर्स से कैसे वेव फ्रंट निकलेंगे? सर्कुलर वेव पैटर्न. So this type of wave pattern on the screen you will find out. At maximum it is maximum on the middle, and if you go away from the middle portion of the screen, the pattern will disturb. Got it? And this is how it's happening. Got it? If anyone has any kind of doubt in this, you can ask right now. Now, so according to the constructive and destructive interference theory, we will have two spot, bright spot and dark spot. Now, I have told you, wherever the same phases will meet, wherever the phase wave front having same phase will meet, they will produce a constructive interference. And wherever the different wave front will meet, they will produce a destructive wave pattern. ठीक है? Clear हुआ? Now, same will be happening here because wave front is the only thing which is traveling along. So the red point denotes what? Constructive interference, and black point denote the destructive interference. Okay. And this is how you are getting the pattern. Got it? Clear हुआ? Now, same that we have analyzed the path of interference by combining two slits. But diffraction is the phenomena that you will observe in a single slit experiment. So we will see the path of light in a single slit experiment and calculate the path difference. And then we will understand that what is constructive and destructive here. Okay. So suppose we have selected a slit of length A, name Ln. And this is the screen which is very far away from the slit. This is the wave front is coming around, plane wave front.
Now, according to the theory, the light bend from the corner of the slit. So, if you will see the path of this ray is going like this. But at the same time, this ray has started at this time later, and this ray has started this time or this distance later, which means there is a path difference in between L and N. Got it? And that path difference we have to calculate. Now, clearly, if you will see the wave which is traveling along the path L to the screen is further or is leading the wave which is on N and reaching to the point on the screen. Okay? Each and every wave will make the same angle theta here. Now, path difference between the two edges of the slit is given by NP minus L. This is only the path difference. Na? This I have drawn. This. And it is given by what? NP. This is N. And here is P. On the screen, the point P is on the screen we have taken. So, LP, when you join L to P, and when you join N to P. So, जो distance L और P के बीच का है, which is called as LP, and distance between N and P is NP. तो NP में से LP अगर हटाओगे तो आपको मिलेगा क्या? पैथ डिफरेंस मिलेगा इन दो रेज के बीच का. ठीक है? And that is what we have simply do it here. Now, and this is nothing but the NQ, this distance. अब देखो, अगर ये A है, so this component will be the perpendicular component of this A, which is A sin theta. So NQ को मैं लिख सकता हूँ A sin theta. कोई डाउट है? NP को मैं क्या लिख सकता हूँ? NQ को A sin theta. It is nothing but the component of this A. It is nothing but like this. This is A. This is A, and this is we are having theta angle. ठीक है? And let's say this is perpendicular. So this is behaving as a hypotenuse. If you apply the sin theta here also, you will get perpendicular, which is this length, upon hypotenuse. Perpendicular we want to know, which is NQ, divided by hypotenuse is A. So NQ here will coming out as A sin theta. Got it? Same thing will be happening here. Path difference is coming out as A sin theta. For smaller angle, because the distances are very low, so this angle will become theta only. So path difference here is A into theta. Okay. Now there is a central bright fringe that will occur in this process. ठीक है? So central bright fringe का position अगर आप देखोगे तो center में ही होगा, but उसकी width बहुत ज्यादा important होती है. ठीक है? So suppose this is the width of that central fringe. ठीक है? So at the central point on the screen, the angle theta is 0. So जो path difference होगा light rays के बीच में, वो भी कितना होगा? 0 होगा. So all path differences are 0, and hence all the parts of the slit contribute in phase. तो यहाँ से जहां भी एंगल 0 होगा, इस पोर्शन में सारी की सारी रेज क्या है? इन फेज है. मतलब जो सेंटर में मुझे जो फ्रिंज मिलेगा या जो ब्राइटर स्पॉट मिलेगा, वो बहुत ज्यादा ब्राइट होगा. क्यों होगा? क्योंकि ईच पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग ऑफ द रे. ठीक है? ईच पार्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग. जिसका भी एंगल थीटा 0 हुआ सेंटर से यहाँ तक, वो सारे पार्ट इसमें क्या करेंगे? पार्टिसिपेट करेंगे. ठीक है? सेम फेज है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा. ठीक है? So that's why we are having maximum intensity at point O, which is also known as central bright fringe. Now the location of dark fringe, again the same concept we are going to apply. We will divide this as A by 2 and A by 2 distance. It will behave like two slits are there. Now these are the plane wave. Again, path difference you will find out, which is nothing but coming out as, for L to N it is coming out as this much, and for L to M it is coming out as this much.
सो द पैथ डिफरेंस बिटवीन रे एल एंड एम, एल और एम के बीच में तो ये है, विच इज नथिंग बट ए बाई टू इंटू थीटा. एंड फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस दिस ए बाई टू इंटू थीटा विल बी प्लस माइनस लैम्डा टू. क्योंकि देखो पैथ डिफरेंस क्या बताया था मैंने, जो फेज डिफरेंस होता है, पैथ डिफरेंस इज नथिंग बट इक्वल्स टू, ओके जेनवी नगांव से है ये, ठीक है. पैथ डिफरेंस इज नथिंग बट लैम्डा अपॉन 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस, एंड फेज डिफरेंस को वी विल डिनोट विद डेल्टा फाई. ठीक है. पैथ डिफरेंस मेरा कितना है, ए बाई टू टाइम्स ऑफ थीटा, इट इज लैम्डा अपॉन 2 पाई. अब देखो, अगर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है देन दिस फाई विल बी क्या, पाई. कल बताया था मैंने आपको, है ना. पाथ डिफरेंस को डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करने के लिए दिस फाई शुड बी पाई. पाई एंड पाई विल कैंसिल आउट. अल्टीमेटली दिस थीटा इज नथिंग बट दिस साइन थीटा ना. तो साइन पाई की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी वी नीड मिनिमम इंटेंसिटी. So this pi and pi will cancel out. So it is coming out as plus minus lambda. So for every point M1 in part LM, there will be point M2 at A by 2 distance in part MM. देखो, अब यहाँ से अगर ये वाली डिस्टेंस कितनी है, A by 2 है. If this distance is A by 2, here to here it will be A by 4. This is also A by 4. And again it is A by 2 also. This you can also comprise into two distances, A by 2 to A by 2. सो M1 से लेकर के यहाँ इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना हुआ, A/4 प्लस A/4 विच इज नथिंग बट A/2. सो फॉर एवरी पॉइंट M1 इन पार्ट LM, L to M, this to this is, there will be a point M2 at A/2 distance in part MN. ठीक है. तो वहां वहां पे मुझे क्या मिलेगा, कंस्ट्रक्टिव इंटर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिलेगा. तो दिस इज फॉर द कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा, विच इज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई ए. ठीक है. ये कहाँ से आया, सो ए बाई टू टाइम्स थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई टू. टू एंड टू विल कैंसिल आउट, सो थीटा इज कमिंग आउट एज प्लस माइनस लैम्डा बाई ए. ठीक है. इसका सिंपल सा कहने का मतलब ये है इस पॉइंट का, अगर आप समझोगे. देखो, अगर यहाँ आप एक पॉइंट कंसिडर करते हो बिटवीन एल टू एम, विच इज एट अ डिस्टेंस ए बाई फोर, सो ऐसा सेम पॉइंट एम और एन के बीच में भी आपको मिलेगा, विच इज यहाँ ए बाई फोर डिस्टेंस. तो जैसा ये बिहेव करेगा ऐसा ये बिहेव करेगा, इन दोनों के बीच का पैर डिफरेंस भी क्या रहेगा, सेम. तो सिमिलर डिस्टेंस पे लेट से आपने एल से M1 तक, ये M1 पॉइंट आपने ए बाई टू के बजाय किसी और डिस्टेंस पे कंज्यूम किया, यहाँ पे किया इस डिस्टेंस. बट अगर आप यहाँ से सेंट्रल लाइन से भी उतनी ही डिस्टेंस पे कोई पॉइंट कंसिडर करेंगे तो उनमें भी फेज डिफरेंस क्या आएगा, सी. यानी कि वो दोनों क्या करेंगे आपस में, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करें. ठीक है ना. तो इसलिए कंडीशन फॉर फर्स्ट मिनिमा हियर इज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई ए. ठीक है. The angular size of central maxima increases when the slit width A decreases. तो जितना कम आपका slit width होगा उतना ज्यादा आपको क्या मिलेगा, इंक्रीज मिलेगी, जो मैक्सिमम होगी विड्थ किसकी, सेंट्रल मैक्सिमा. तो जनरल कंडीशन फॉर मिनिमा इज थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई. अगर n की वैल्यू 1 है तो फर्स्ट मिनिमा, 2 है तो सेकंड मिनिमा, 3 है तो थर्ड मिनिमा. नाउ द लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, अगेन देखो यहाँ पे 3 पॉइंट कंसिडर कर ली. तो 3 पॉइंट कंसिडर करोगे A/A/3 डिस्टेंस पे, तो आपको क्या मिलेगा. So if wave from any two parts will be interfere destructively, then the third part will leave some intensity on the screen. अगर दो ने आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया, सपोज
इस पॉइंट ने और इस पॉइंट ने आपस में डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर लिया, तो ये पॉइंट तो बचा गया। यहाँ से जो वेव जाएगी वहां, वो क्या रहेगी, उसकी इंटेंसिटी तो बची रहेगी। इसका मतलब क्या हुआ, वो सेकेंडरी मैक्सिमा है। ठीक है, अगेन पढ़ो। इफ waves from any two parts will be interfere destructively, then third part will leave some intensity on the screen and it will be secondary maxima. ठीक है, and this is pretty much understood here. So the path difference between the ray L to M dash will become A by 3 into theta. For destructive interference, A by 3 theta is plus minus lambda by 2. We have seen that. ठीक है, so जैसा पिछली डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि फॉर एवरी पॉइंट M1 in part L M dash, there will be a point M2 at A by 3 distance in part M dash M double dash. तो यहाँ से अगर मैं पॉइंट कंसिडर करूंगा A by 3 डिस्टेंस पे, तो यहाँ से भी A by 3 डिस्टेंस पे एक पॉइंट, सेम पॉइंट कंसिडर मैं कर सकता हूँ, जो कि दोनों क्या करेंगे, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन द प्रीवियस केस। ठीक है, तो अब देखो, इन दोनों ने, ये वाला और ये वाला, नीचे वाला और ऊपर वाला, इन दोनों ने क्या किया, आपस में कंस्ट्रक्ट डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया, तो बच गया ये पार्ट, तो इसकी इंटेंसिटी मुझे वहां पे शो होगी, तभी मैंने इसे ब्राइट कलर से दिखाया, which means this is the intensity that we see on the screen, but it is not too intense, so that is why it is the secondary maximum. So condition for second maxima is theta should be plus minus 3 by 2 times of lambda by a, और उसमें क्या था, lambda कितना होना चाहिए था डार्क फ्रिंज के लिए, कंडीशन फॉर मिनिमाइज एंड lambda अपॉन ए, जनरली इट इज lambda by a, और वहां पे 3 by 2 times of lambda. Okay, what it is, 3 by 2 times of lambda. I hope that you are getting it. So here intensity of secondary maximum will be much less than the central maximum. मतलब सबसे ज्यादा bright spot तो आपको center में ही मिलेगा. These maximas will be somehow bright but not bright as the previous one. Got it? Now intensity variation. अब देखो, आप central maxima पे आपको सबसे bright spot मिला, and the other maximas are what? Other maximas are less than. Other maximas are having less intensity than the central one. So we can say that the intensity variation here will be different. Intensity variation will be different here. Look at this. This is the intensity and this is the angular distance from the slit. This kind of variation you are having. These smaller distances that you are seeing is the secondary maximum. This is the secondary maxima. Got it? So please do remember this graph is for the intensity variation of diffraction or single slit. क्लियर है, तो lambda by a पे क्या मिला मुझे, मिनिमा, जीरो इंटेंसिटी, दिस डिस्टेंस विल बी 3 by 2 टाइम्स ऑफ lambda. ठीक है, अब ये डिस्टेंस कितना होगा, दिस डिस्टेंस विल बी 3 by 2 टाइम्स ऑफ lambda अपॉन ए, 1, 1.5, 2, दिस विल बी 2.5, 4, देखो आप चाहिए, इट विल बिकम 3 by ऑफ 2.5 के बाद क्या आएगा, 3, 3 lambda अपॉन. Similarly for this. Now, here the question is, a person is standing along one side of a building and a car is driving along the side of the building. A person can hear the car approach but cannot see it. This is explained by the fact that sound wave. अब देखो साउंड वेव क्या करती है, बैंड हो सकती है क्योंकि वेव है, तो साउंड वेव ट्रेवल मोर स्लोली देन द लाइट वेव. साउंड वेव आर डिफ्रेक्टेड मोर एट द कॉर्नर ऑफ द बिल्डिंग देन लाइट. क्यों? क्योंकि साउंड वेव स्लो होती है, अब लाइट वेव तो बहुत तेजी से मूव करेगी,
तो इसलिए बेंडिंग के लिए बेंडिंग होगी उनकी, लेकिन बहुत कम उनके पास टाइम। इसलिए कॉर्नर से खड़ी हुई कार का आपको लाइट बहुत कम दिखेगा, बट यू कैन सी, यू कैन हियर द हॉर्न ऑफ दैट क्लियरली। दिस इज द ओनली रीजन। ठीक है, अब बताओ, व्हाट इज दिस? Sound wave diffracted have wavelength in range 17 mm to 17 meters so that it easily move around the corner and obstacle in this size. ठीक है, while as light will not. तो लाइट को बेंड कराने के लिए यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द स्लिट साइज. तो स्लिट साइड शुड बी इन द ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ ऑफ वेव. ठीक है. Now, again, a parallel beam of light of wavelength 4000 angstrom gets diffracted by a slit, single slit of width 2 mm. अब देखो यहाँ पे single slit है, which means diffraction is taking place. What is the angular position of the first minima of diffracted light? बताओ कैसे सोल्व करेंगे, सब कुछ आपको गिवन है. देखो, wavelength of the light is given to as 4000 angstrom. Single slit की width given है, which is a. ठीक है, all units should be converted in the same. Condition for first maxima is nothing but theta is equals to plus minus lambda upon. So theta you would find out. Now this question, a single slit of width A is illuminated by violet light of wavelength 400 nanometer. And the width of the central fringe of the diffraction pattern is measured as y. When half of the slit width is covered and illuminated by yellow light of the wavelength 600 nanometer, the width of the central fringe of the diffraction pattern. ठीक है. देखो, आपको सबसे बीच में क्या मिलेगा? ब्राइट स्पॉट मिलेगा. इसके साइड में डार्क है, यहाँ भी डार्क है. ये भी फर्स्ट मिनिमा है अपर साइड का, ये भी फर्स्ट मिनिमा है डाउन साइड का. दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज का विड्थ होगा. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है. नाउ, पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा विल बी थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस लैम्डा बाई थीटा. ये इसकी पोजीशन है, यहां से शुरू होगा. ये मेरा क्या है? मिनिमा है, विच इज डार्क स्पॉट. और ये मैंने बताया था ना, ऊपर से नीचे ये भी फर्स्ट मिनिमा है, ये भी फर्स्ट मिनिमा है. दैट इज व्हाई इट इज प्लस माइनस. प्लस मीन्स ऑन द अपर साइड, माइनस मीन इन द डाउनवर्ड साइड. व्हाट इट? सो ब्राइट फ्रिंज की विड्थ कितनी हुई? एंगुलर विड्थ बीटा इज नथिंग बट lambda प्लस ए माइनस lambda अपॉन ए माइनस lambda. So it will become 2 lambda upon a. This is the width of angular maxima. देखो, given है ना 2 theta, which will become 2 lambda upon a. Now beta angular is nothing but 2 lambda upon a, जो मैंने किया था सेम. Now width of central maxima, अब width क्या होगी? बीटा एंगुलर मल्टीप्लाई बाय द डी. डी इज द सेपरेशन इन बिटवीन द. ये क्या है? सेपरेशन है. कितनी सेपरेशन है? कैपिटल डी. ठीक है. ये कैसे? देखो, ये एक आर्क साइड है. आर्क, we know that angle is nothing but arc upon radius. Arc size is the width of this, and radius we can conclude as capital D. Got it? अब देखो, हाफ हमने कवर कर दिया था, तो बीटा मेरे पास कितना है? 2 लैम्डा डी अपॉन. ये आपको याद भी रखना है. दिस इज इम्पोर्टेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ बीटा वी नो. अब मैंने कितनी विड्थ कवर कर दी है? हाफ ऑफ द विड्थ वी हैव कवर्ड विद द येलो लाइट.
तो बीटा वॉयलेट अगर यहाँ से आप देखोगे तो यू कैन पुट डाउन द वैल्यू फॉर येलो लाइट, half of the slit width is covered, which means A will become A by 2 and lambda will become 600 nanometer. So beta yellow will become 2D multiplied by 600 upon A by 2, which is 2400 D upon. So we want to find out the width of central fringe of the diffraction pattern. तो सेंट्रल फ्रिंज की विड्थ कितनी होगी 3y, देखो ये कितना है 3 टाइम्स ऑफ y। अब जो मेरी विड्थ बनेगी 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस विड्थ। किसी को कोई डाउट है? एनी काइंड ऑफ डाउट गाइस? You can ask if you are having any kind of doubt. You can ask. Is this question clear to you? Any yes and no? भगत, क्रिस्टीना, जेएनवीसी, कोकराझार, रोइंग, भावनगर, आके, वेदांत, कदपा, शिवमानी, निकिता, एवरीवन। यार अगर समझ में आ रहा है तो बताओ ना। ओके, वेरी गुड। चलो, another question you can solve it down. चल, let me focus on the other thing. Diffraction pattern. So diffraction pattern for circular opening will be ring type. तो ऐसे बनेंगे ये देखो। ये अगर सर्कुलर ओपनिंग है तो टॉप व्यू से आपको ये ऐसा दिखेगा। दिस वुड बी लुक लाइक दिस। ये प्लेन वेव आ रही है, यहाँ पे एक सिंगल स्लिट है सर्कुलर ओपनिंग की। तो एट द स्क्रीन यू विल बी सीइंग दिस टाइप ऑफ पैटर्न। ठीक है, अब आप दे सकते हो। लाइट को यहीं पे ही हमें डार्क मिलना शुरू हो जाना चाहिए था, बट लाइट एक्सटेंड कर रही है अपने आप को, एनक्रोच कर रही है शेडो वाले पार्ट। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट में मैक्सिमम इंटेंसिटी है, देन स्लोली स्लोली इट इज डिक्रीज। गॉट इट? व्हाइट लाइट अगर हम यूज करेंगे तो these types of pattern you will form, you will have these types of pattern, and I hope that you have seen these patterns. ये रेजर ब्लेड है, अगर इसे भी आप इल्यूमिनेट करोगे ना किसी कोहेरेंट सोर्स से जिसमें मोनोक्रोमेटिक लाइट हो, this will also show you a kind of diffraction pattern, and this is the diffraction pattern of a single slit when illuminated by a coherent monochromatic source. Now what is diffraction? अगर डिफ्रैक्शन डबल स्लिट में करेंगे तो क्या होगा? अभी तो सिंगल स्लिट में हो रहा था। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट ऑल्सो एग्जिबिट डिफ्रैक्शन इफेक्ट एज द स्लिट्स हैव फाइनाइट विड्थ। ठीक है, तो वो भी हो सकता है, बट उसमें जो आपकी इंटेंसिटी होगी ना, वो देखो कैसे पैक होगी। दिस मीन्स द इंटेंसिटी एट एन एंगल थीटा विल बी मॉडिफाइड देन बाय सेम फैक्टर एज इन सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। अब देखो, ये इंटेंसिटी है डिस्टेंस अलोंग द स्क्रीन। For double slit interference pattern, this intensity should be, we have in the previous session we have discussed it. Dense and intensity of brighter fringe and darker fringe will be same, but intensity distribution for double single slit diffraction, अब सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन से तो ब्राइटर स्पॉट मैक्सिमम तो सेंट्रल पे ही मिल रहा था, उसके बाद सभी बहुत कम हो रहे हैं। ठीक है, व्हाट वी कैन से व्हेन वी डू इट फॉर डबल स्लिट, डबल स्लिट में आपको इस तरह के पैटर्न देखने को मिल सकते हैं। This itself is the actual intensity distribution for double slit interference. एक्चुअलिटी में आपको ये होगा, और ये हो किस लिए रहा है? क्योंकि डिफ्रैक्शन ऑलवेज इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। तो जब डिफ्रैक्शन आ ही गया है तो वो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जीज कर रहा है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेंसिटी विल बी देयर, एंड दैट इज व्हाई दिस विल एडजस्टेड इन दिस वैल्यू। ठीक है, सो ये सेंट्रल मैक्सिमा है, उसके लिए ये दो सेकेंडरी मिनिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा हो। अगेन फिर यहाँ पे एक सेंट्रल मैक्सिमा, उसके लिए ये क्या होंगे? सेकेंडरी मिनिमा। ठीक है, लाइक दिस। सो इट इटसेल्फ कंपोज ऑफ दिस डॉटेड लाइन को अगर आप फॉलो करोगे, इट इज नथिंग बट शोविंग यू अ कंप्लीट डिफ्रैक्शन पैटर्न।
So the interference pattern is itself packed in it. Got it? इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन एनवेलप बोलते हैं. Now what is the difference between interference and diffraction? Interference is due to the superposition of two different waves coming from the coherent sources. और diffraction किस वजह से हो रहा है? Diffraction is due to the superposition of secondary wavelet, जो खुद स्लिट से, जिसे हम पॉइंट मान रहे हैं, पॉइंट सोर्स मान रहे हैं, उससे जो वेवलेट निकल रही है, दैट सुपरपोजिशनिंग इज डिनोटिंग इनटू डिफ्रैक्शन. So diffraction is due to the superposition of secondary wavelet from the different part of the same wavefront. Wavefront वही है, but different part से जब आप उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, सुपरपोजिशनिंग देख रहे हैं वेवलेट्स की, that is called the diffraction. Now second point is that fringe width जो है generally constant होती है for interference, but in diffraction fringe width are varying. All maxima have the approximately same intensity in interference, but in the diffraction maxima are varying in intensity. तो जो central maxima होगा that has the larger intensity, and the rest in maxima will be having the intensity less than the central one. ठीक है. Interference में क्या मिलेगा? There is a good contrast between the maxima and minima, which means आप easily देख पाओगे कि यहाँ पे मेरे पास bright spot है और यहाँ पे dark spot है. But as we have seen that encroachment of light is happening in the shadow region also, तो यहाँ पे आपको poor contrast मिलेगा between maxima and minima. Now let's just discuss some fact about polarization. In this we will be seeing polarization, selective absorption of the polarization by polarization, and polarization by reflection. Now introduction to polarization. We know that the light ray is nothing but the combination of varying electric and magnetic field, and that is why we categorize what we categorize light as a electromagnetic wave. Okay, so light is nothing but the oscillations of varying electric and magnetic field, and this is also categorized as the transverse wave. So alternating electric और magnetic field का oscillatory fields का वेरिएशन ही क्या कहलाता है? लाइट कहलाता है. Red color is denoting electric field and blue color is denoting magnetic field. Now here the one point is to be noted that these oscillations are happening perpendicular to each other. Got it? And each point of time, the intensity is also varying in nature. Now, so in natural light, millions of transverse vibration occurs in all the direction perpendicular to the direction of propagation of wave. And we have seen this through the Huygens principle. So in Huygens principle, we have seen the point source producing the light in each and every direction. Like this. This is the natural light. But what is a polarized light? That we only demand the light in a particular direction. That is nothing but the polarization. Got it? With a particular intensity, with a particular direction. So we can assume the rectangular component of the vibration with one component lying on the plane of the diagram and other perpendicular to the plane of the diagram. तो इसका मतलब क्या है कहने का? We are resolving these component, we are resolving these other component into the horizontal and perpendicular direction. ठीक है? All the component, so that we can assume the light in only in two direction, which is horizontal and perpendicular direction. Got it? Like this. So this will form a wave. These red dots are nothing but coming outward like this. These are perpendicular 90 degree. ठीक है? Red is perpendicular to the plane and blue is parallel to the plane. Unpolarized light is light which the plane of vibration are symmetrical, distributed about the propagation direction of wave. ठीक है? Again, I am reading this. Unpolarized light is the light in which the planes of the vibration are symmetrically distributed about the propagation direction of wave. Like this is a point source.
सो लाइट इमिटिंग बाय द सन इज द एग्जाम्पल ऑफ अनपोलराइज लाइट। क्योंकि अगर आप देखोगे, ये जो प्लेन है इसके अलोंग भी ये ऑसिलेट कर रहा है, इसके अलोंग भी ये ऑसिलेट कर रहा है, तो ये सिमेट्रिकली एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। ठीक है। तो जो वाइब्रेशन है ना इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूशन है अलोंग द प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। ठीक है। जैसे लाइट इमिटेड बाय सन, लाइट इमिटेड बाय अ कैंडल और अ फ्लेम आर द एग्जांपल्स ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट। नाउ व्हाट इज पोलराइजेशन? So polarization is restricting the light to oscillate only in one plane. तो oscillation of transverse wave in only one plane. किसी भी एक plane में ही oscillate करे light, that is the polarization, and that light is termed as plane polarized light. So plane polarized light is a wave in which electric vector is everywhere confined into the single plane, which means we are vanishing the magnetic field vector in the plane polarized light. जैसे देखो, ये दो वेक्टर्स है मेरे पास। ब्लू कलर लेट से रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड रेड कलर रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर मुझे सिर्फ ये एक लाइट वेव मिले एंड सिर्फ ये एक लाइट वेव मिले, तो मैं इन्हें क्या बोलूंगा? दीज आर लीनियरली पोलराइज्ड लाइट, बिकॉज इस वेव में देर इज नो अदर प्लेन इन विच द फिजिकल क्वांटिटी विच इज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग। कोई और प्लेन नहीं है, सिर्फ इसी प्लेन के परपेंडिकुलर ये क्या कर रही है? ऑसिलेट कर रही है, सिंगल प्लेन। सिमिलरली फॉर दिस साइड आल्सो, these are oscillating also in the horizontal direction. So these types of pattern of light is nothing but the plane polarized, linearly polarized light. ठीक है। So it is a wave in which electric vectors oscillate in a given constant orientation. तो यहाँ पे सिर्फ हम इलेक्ट्रिक फील्ड का ही वेरिएशन पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का नहीं, दैट इज आउट ऑफ द स्कोप। अभी ट्रांसवर्स मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव माने आपने कोई स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है वन एंड से, और दूसरे एंड पे ये जाके मिली, ये देखो। अब ये जो स्लिट है, नैरो स्लिट, इट विल ओनली अलाउ द ओसिलेशन इन दिस डायरेक्शन ओनली, इन दिस परपेंडिकुलर प्लेन। अगर मैं ऐसी वेव भेजू इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो ओसिलेट करे, यहाँ सारे के सारे वेनिश हो जाएंगे और मुझे क्या मिलेगा? एक लाइन सोर्स मिलेगा। ठीक है। अगर मैं इसे ही टिल्ट कर दूं 90 डिग्री पे, सो व्हाट आई एम गेटिंग हियर? द लाइन सोर्स ओनली। ठीक है। बिकॉज ये पास ही नहीं होने देगा आगे, इट विल एक्ट एज अ बैरियर और अ ऑब्स्टिकल और अ फिल्टर, यू कैन से। तो सेम थिंग वी कैन डू विद द polarization technique. So polarization can be obtained from an unpolarized beam by selective absorption, and second is reflection. Third part is also there, but it is not important to you. Now selective absorption क्या है? अब selective absorption में we will use a material which is termed as, or a device which is termed as polarizer, पोलोराइड। तो आपने सुना होगा बहुत बार कि पोलोराइड मिरर्स हैं इस गाड़ी में, पोलोराइड विंडशील्ड है, which is saying that they have used the material which will filter out the light, so that by driving in the night you will not get a very sparky light in your eyes by the other vehicles, because it will resolve the wave into one plane only. Okay. So ultimately we are decreasing the intensity of the light. Transmit wave whose electric field vector in the plane of the parallel to a certain direction. अब किस डायरेक्शन में करना है? दैट इज R6. So it will absorb the wave whose electric field vector are perpendicular to that direction. And after polarization, the intensity of light will be half of the unpolarized light. क्योंकि हाफ तो ये खा ही गया है ना। अब ये आया देखो भी, रेड कलर क्या था? परपेंडिकुलर था, बट फाइनली व्हाट यू आर गेटिंग ऑन द फाइनल साइड? ओनली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। रेड कलर वाले ऑसिलेशन क्या हो गया? सब के सब खा गया है। ठीक है। इस डिवाइस को या इस मटेरियल को हम क्या बोलते हैं? पोलराइजर। अब आने से पहले इंटेंसिटी कितनी थी? आई नोट। अब फाइनली कितनी हो जाएगी? आई नोट बाई 2, बिकॉज हाफ ऑफ द ऑसिलेशंस आर गॉन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? अब देखो, यहां से ये लाइट आई, ये पोलराइजर यूज किया मैंने,
अब इसी डायरेक्शन में मुझे क्या मिली, प्लेन पोलराइज लाइट। अगर मैं दोबारा भी एक दूसरा पोलराइजर वहां पे यूज कर लूं, और अगर मैं इसे टिल्ट कर दूं किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो केवल उस ही डायरेक्शन का ऑसिलेशन फिल्टर आउट होगा, और दूसरी डायरेक्शन में कोई भी ऑसिलेशन नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इन दिस केस वी हैव प्लेस्ड दिस एनालाइजर परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द ऑसिलेशन, तो ये ही ऑसिलेशन फिल्टर आउट होकर के आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है। सिलेक्टिव माने क्या हुआ, सपोज इसमें वॉयलेट कलर भी आ रहा था, इसमें ब्राउन कलर भी आ रहा था, ब्लू कलर भी आ रहा था, इसमें ग्रीन कलर भी आ रहा था, बट दिस एनालाइजर वी आर यूजिंग ओनली फॉर ग्रीन कलर। So what it will do? It will only filter out the green color and rest it will be absorbed. So that is why this process is termed as selective absorption. ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब देखो जैसे ही मैं इसे टिल्ट कर दूंगा 90 डिग्री पे, तो मुझे कोई लाइट नहीं मिलेगी। क्लियर हुआ? तो दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज द सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। व्हाट इज मैलिस लॉ? मैलिस लॉ को ये आपको स्टेटमेंट याद रखना चाहते हो तो याद भी रख सकते हो, but it's very simple. If you tilt the polarizer by an angle theta, intensity is directly proportional to cos square of the theta, which means I is equals to I naught cos square theta. जब theta क्या होगा, zero, when you are having the maximum intensity, and when theta is 90 degree, so you are having the minimum intensity that we have seen in the previous case also. ठीक है। देखो when theta is zero, I is equals to I naught, और वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा था, ऐसे ऐसे बाहर आ जाएगा। But when we tilt it to 90 degree, then what will be? There will be no light, क्योंकि उस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर ऑसिलेशन हो रहा है। तो पोलराइड इज मेड ऑफ द लॉन्ग चेन molecule oriented with their axis perpendicular to the polarizing axis. These molecule preferentially absorb light that is polarized along their length. ठीक है। This is a kind of polarized. ये पोलराइजर एक्सिस है, अब जो इनकी एक्सिस के अलोंग है उसे ही पास करेंगे, बाकी जो परपेंडिकुलर है उसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। रिफ्लेक्शन से कैसे होगा देखो, when the unpolarized light beam is reflected from a surface, the reflected light could be, कैसी हो सकती है रिफ्लेक्टेड लाइट, या तो अनपोलराइज्ड की अनपोलराइज्ड रिफ्लेक्ट हो जाए, या फिर पार्शियली पोलराइज्ड हो जाए, या फुल्ली हो जाए, कंप्लीटली पोलराइज्ड। सो इसके लिए कंडीशन है अगर इंसिडेंट एंगल 0 या 90 डिग्री, देन द रिफ्लेक्टेड बीम इज अनपोलराइज्ड, मतलब नॉर्मल इंसिडेंट हुआ या पैरेलल टू द प्लेन इंसिडेंट हुआ, तो उस केस में लाइट की इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी, अनपोलराइज्ड लाइट अनपोलराइज्ड ही रहेगी। बट इफ द एंगल इज 0 to 90, which means in between 0 and 90, then there is some degree of polarization can occur, and for a particular angle there will be complete polarization. Now this, here's a come is Brewster's law. This is also mentioned in the JEE main curriculum. For angle between 0 degree and 90 degree, there is some degree of polarization, but that is not 100%. देखो ये मेरा मटेरियल है म्यू, यहाँ पे प्लेन वेव फ्रंट आया, उसके बाद मैंने क्या किया, पार्शियल रिफ्लेक्शन पार्शियल रिफ्रैक्शन हुआ, तो मुझे मैक्सिमम पोलराइड कब मिलेगा, व्हेन जो रिफ्लेक्टेड रे है या रिफ्लेक्टिव वेव फ्रंट है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट से 90 डिग्री के एंगल पर। So when the reflected ray is perpendicular to the refracted ray, the reflected light will be completely plane polarized. ठीक है, like in this case ये IB हुआ, this angle is also IB due to the law of reflection. If this angle between the reflected ray and refracted ray is 90 degree, then we can say that the light that we are getting here, only you are seeing only plane polarized, सिर्फ single direction में oscillation. And the angle of incident at which the reflected light is completely plane polarized is called the polarizing angle or Brewster angle. Brewster.
ठीक है, और इसके कैलकुलेशन अगर आप करोगे तो आई बी प्लस आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। वी कैन से दैट आई बी प्लस आर, देखो ये टोटल एंगल कितना है 90 डिग्री, ये एंगल भी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ से आप लगा सकते हो आई बी प्लस आर शुड बी 90 डिग्री। आर वुड बी 90 माइनस आई बी। अगर आप स्नेल्स लॉ लगाओगे फर्स्ट सरफेस और सेकंड सरफेस के लिए तो म्यू जो कि 1 है, 1 यानी साइन आई बी इज इक्वल टू म्यू साइन आर। अगेन यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ आर इन टर्म्स ऑफ आई बी, sin ib by cos ib is equals to mu, so that angle will be tan ib, which is equals to mu, refractive index of the material. ठीक है, now this is the question here. Critical angle for a medium is 45 degree, find the Brewster angle. Critical angle किससे लिखते हैं, sin inverse, ठीक है। sin inverse c, theta c is nothing but sin inverse 1 by mu, which is given as what, 45 डिग्री। यहाँ से आपके पास म्यू की वैल्यू आ जाएगी। And what is Brewster angle? Brewster angle is what? Tan inverse root 2. This is the polarizing. So I hope that this would be pretty much understandable for you. I have launched a poll. Please do participate in that poll so that I can make your attendance. Got it? And let me know in the chat box if you are having any kind of doubt.